ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायाम् अथ त्रयस्त्रिंशो अध्याये। नन्दीश्वरवाच सनत्कुमार सुप्रीत्या शिवस्य परमात्मना अवतारं शृणु विभोर्ज तिलाहवं सुपावनं पुरा सती दक्षकन्या त्यक्त्वा देहं पितुर्मुखे स्वपित्रा नादृताय यज्ञे मेनायां हिमभूधरात् सा गत्वा गहनेरण्ये तेपे सुविमलं तपः शङ्करं पतिमिच्छन्ति सखीभ्यः संयुता शिवा तत्पासु परीक्षार्थ सप्तर्षीन् प्रैष्यन् यच्छिव तपास्थानं तु पार्वत्या नानालीला विशारदा ते गत्वा तत्र मुन्नया परीक्षां चक्रुरादरात् तस्यासूयन्नतो नैव समर्थाः भंवक्षते तत्र गत्य शिवं नत्वा वृत्तान्त च निवेद्य तथाज्ञां समनुप्राप्य सर्वलोकं जगमुरादरात् गतेषु तेषु मुनिषु स्वस्थानं शङ्करः स्वयं परीक्षितुं शिवावृतमेच्छत्सूतिकर प्रभुः सुप्रसन्नस्तपस्विच्छा शमनादयमीक्षरा ब्रह्मचर्यस्वरूपो भूतदादुत्तरप्रभुः अतीव सत्विरो विप्र देहधारी स्वतेजसा प्रज्वलमनसा हृष्टो दण्डिछत्रिमहोज्ज्वला धृत्वैवं जाटिलं रूपं जगाम गिरिजावनम् अतिप्रीतियुता शम्भुः शङ्करो भक्तवत्सला तत्र पश्य स्थितां देवी सखीभिः परिवारिताम् वेदिकोपरिशुद्धान्ता शिवामेव विधो कलाम् शम्भुर्निरीक्षयतां देवी ब्रह्मचारी स्वरूपवान् उत्कण्ठं ययो वृत्या चोतुसुखी भक्तवत्सला आगतं सा तदा दृष्ट्वा ब्राह्मणं तेजसाधुतम् अङ्गेषु लोमशं शान्तं दण्डचर्मसंवृतं ब्रह्मचर्यधरं वृद्धं जटिलं सखमण्डलम् अपूजयत् परप्रीत्या सर्वपूजोपहारके तथा सा पार्वती देवी पूजितं परया मुदा कुशलं पर्यपृच्छतं ब्रह्मचारीन् मादरात् ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्तवं हि कुत आगत इदं वनं भास्यसि वद्वेदा विदाम्बर नन्दीश्वर उवाच इति पृष्टस्तु पार्वत्या ब्रह्मचारी स वै द्विजा प्रत्युवाच द्रुतं वृत्या शिवाभावपरीक्षया ब्रह्मचार्युवाच अहमिच्छाभिगामी च ब्रह्मचारी द्विजक्ष वै तपस्वी सुखदोऽन्ये शामुपकारी न संशय नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा ब्रह्मचारी स शङ्करो भक्तवत्सला तस्थिवानुपकण्ठं स गोपाय नृपमात्मन् ब्रह्मचारी उवाच किं ब्रवीमि महादेवी कथनीयं न विद्यते महानर्थकरं वृत्तं दृश्यते विकृतं महत् न वै वयसि सदोग साधने सुखकारणे महोपचार सदोर्गैर्वृथैव त्वं तपस्यसि का त्वं कस्यासि तन्या किमर्थविजने वने तपक्षरसि दुर्धर्षं मुनिभिः प्रयतात्मभिः नन्दीश्वर उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी उवाच वचनं प्रीत्या ब्रह्मचारिन्मुत्तमं पार्वती उवाच शृणु विप्र ब्रह्मचारिन्मद्वृत्तमखिलं मुने जन्म मे भारते वर्षे साम्प्रतं हिमवद्ग्रह पूर्वं दक्षगृह जन्म सती शङ्करकामिनी युगेन त्यक्तदेहाहं तातेन पतिनिन्दिना अत्र जन्मनि सम्प्राप्त सुपुण्येन शिवो द्विजा मा त्यक्त्वा भस्म सात्कृत्वा मन्मथं स जगामः प्रयाते शङ्करे तापाद्
व्रीवृताहं पितुर्गृहात् आगच्छमत्र तपसे गुरुवाक्येन संचयता मनसा वचसा साक्षात् कर्मणा प्रतिभावता सत्यं ब्रवीमि नो सत्यं संवृतं शङ्करो मया जानामि दुर्लभं वस्तु कथं प्राप्यं मया भवेत् तथापि मनसौत्सुक्यात्पयते मे तपोधुना हित्वेन्द्र प्रमुखान् देवा विष्णु ब्रह्मान्मप्ययं पति ममीपनाक् पानी वै प्राप्तुमिच्छामि सत्यत नन्दीश्वर उवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वत्या हि सुनिश्चितं मुने स जटिलो रुद्रो विसन्वाक्यं ब्रवीत् जटिलुवाच हिमाचल सुते देवी का बुद्धि स्वीकृता तव्या रुद्राथं विबुधान् हित्वा करोषि विपुलं तपा जानामयं च तं रुद्रं शिनुतव्यं प्रवदामि ते वृषध्वज स रुद्रो हि विकृतात्मा जटाधरा एकाकी च सदा नित्यं विरागी च विशेषता तस्मात् त्वं तेन रुद्रेण मनो योक्तुं न चार्हसि सर्वविरुद्धरूपादि तव देव विहरस्य च महान् रोचते होतध्यदीक्षसि तथा कुरु नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा च पुनः रुद्रो ब्रह्मचारी स्वरूपवान् निन्द बहुधात्मानं तद्ग्रेतां परीक्षितुं तच्छ्रुत्वा पार्वती देवी विप्रवाक्यं दुरासदं प्रत्युवाच महाक्रुद्रा शिवनिन्दापरं च तम् एतावदि मया ज्ञातं कक्षितन्यो भविष्यति परन्तु सकलं ज्ञातं वध्यो दृश्यतेऽधुना ब्रह्मचारी स्वरूपेण कक्षित्वं दूर्त आगता शिवनिन्दा कृता मूढ त्वया मन्युर्भूनमं शिवं त्वं च न जानासि शिवा त्वं हि बहिर्मुखा त्वत्पूजा च कृता यन्मे तस्मात्तापयुता भवं शिवनिन्दा करोति तत्त्वं ज्ञाय या पुमान् आजन्म सञ्चितं पुण्यं तस्य भस्मीभवत्युत शिवविदेशिनं स्पृष्ट्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत् हरिरे दुष्ट त्वया प्रोक्तमहं जानामि शङ्करं निश्चयेन विज्ञात शिव एव पराप्रभु यथा तथा भवेद्रुद्रो मायया बहुरूपवान् ममामि भीष्टप्रदो यन्तं निर्विकार सतां प्रिय नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वासते शिवा देवी शिवतत्त्वं जगादसा यत्र ब्रह्मात्पारुद्र कथ्यते निर्गुणो व्यय तदा कर्ण्यवचो देव्या ब्रह्मचारी स वै द्विजा पुनर्वचन्मादातुं यावदेव पृच्छकर्मे प्रोवाच गिरिजा तावत् स्वसखीं विजयां द्रुतं शिवासक्तमनोवृत्ति शिवनिन्दापराङ्मुखी गिरिजोवाच वार्णीये प्रयत्नेन सख्ययं हि द्विजाधमा पुनर्वक्तुं मनाक्षायं शिवनिन्दा करिष्यति न केवलं भवेत् पापं निन्दाकर्तुं शिवस्य हि यो वै शृणोति तन्निन्दा पापभाक् स भवेदिह शिवनिन्दा करो वध्य सर्वथा शिवकिङ्करे ब्राह्मणाक्षेतस्वैत्याज्यो गन्तव्यं तत्स्थलादुत्तम अयं दुष्ट पुनर्निन्दा करिष्यति शिवस्य हि ब्राह्मणत्वदध्यक्ष त्याजयो दृश्यक्ष सर्वथा स्थलमेतद्रुतं हित्वा यास्यामोऽन्यन्त्रमाचिरं यथा सम्भाषणं न स्यादनेनाविदुषा पुनः नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा चोमया यावत् पद्मति क्षप्यते मुने असोतावेच्छव साक्षादालम्बे पटं स्वयं कृत्वा स्वरूपं दिव्यं च शिवाध्यानं यथा तथा दर्शयित्वा शिवाय तामुवाच चावाडमुखीं शिवोवाच कुत्रं त्वं यासि माहित्वा न त्वं
जयाम्या शिवे मया परीक्षितासि त्वं दृढभक्तासि मे नघे ब्रह्मचारी स्वरूपेण भावमिच्छुसत्त्वदीयकं तवोपकण्ठमागत्य प्रावोचं विविधं वचा प्रसन्नोऽस्मि दृढं भक्त्वा शिवे तव विशेषता चितेऽपस्थितं वरं ब्रूहि नादे विद्येत्तव अद्य प्रभृति ते दासत् तोभि प्रेम निर्भरे कृतोऽस्मि तव सौन्दर्यार्थक्षन् एको युगायते त्यज्यतां च त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी इहि प्रिये तव्या साकं द्रुतं यामि स्वकं गिरिम् इत्युक्तवती देवेशे शिवातिमुदमापसा तपोदुःखं तु यत्सर्वं तज्जहो द्रुतमेव हि तथा प्रहृष्टा दृष्ट्वा दिव्यरूपं शिवस्य तत् प्रत्युवाच प्रभुं प्रीत्या लज्जाधोमुखी शिवोवाच यदि प्रसन्नो देवेश करोषि च कृपां मयि पतिर्मे भव देवेश इत्युक्तः शिवया शिव नन्दीश्वरोवाच गृहीत्वा विधिवत् पानीं कैलासं स तया ययौ पतिं तं गिरिजा प्राप्य देवकार्यं चकार सा इति प्रोक्तस्तु ते तात ब्रह्मचारी स्वरूपका शिवावतारो हि मया शिवाभावपरीक्षका इदमाख्यानमनघं परं व्याहृतं मया य एतच्छृणुयात् प्रीत्या स सुखी गतिमाप्नुयात् इति चतुरशीत्यवतारा इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शत्रुरुद्रसंहितायां ब्रह्मचारी शिवावतारवर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः।